today I'm going to tell you the features of the other stupa present in Deccan region, basically Nagajini Kunda as well as Sannati. I will try to cover both of them. So after this presentation, I will be showing you the slides of the Sannati or the Kanganhalli stupa, which also flourished in the areas of Deccan. So as the name suggests, Nagajini Kunda. Konda is a Telugu word. You know, if you know Telugu, it means the hill. And Nagarjuni, we know that he was a great philosopher of the Buddhist philosophy. So it is also known as Nagarjuni Hill or Nagarjuni Konda. And this name came into vogue in the medieval period, and the ancient name, so be very careful about the ancient name of this particular place, Nagarjuni Konda. Can anybody answer me? Can anybody answer me? What is the original name of Nagarjuni Konda? Anyway, I will tell you. It is the Bijaypuri. The ancient name of Nagarjuni Konda is Bijaypuri, and this name is after the name of one of the Satvahan ruler. His name was Vijay Satkarni. So after the name of Vijay Satkarni, which is mentioned in the inscription, we know that the name of this place is Nagarjuni Konda. And basically this is a valley. And this valley is not transformed as this particular Nagarjuni Konda into an island. And it is situated, this particular place or this island or the hill, on the bank of the river Krishna. And it is a secluded valley. It is a secluded valley of around 23 square kilometer in area. So now you can imagine the vast area of this particular valley. And on the three sides, it was surrounded by the hill, and it is presumed that these hills were the offshoot of the Nalla Malai range. Nalla Malai means Malai again is hill and Nalla is black. So it is surrounded by in all three sides by Nalla Malai range of the hills. And on the fourth side, this particular valley is itself covered by Krishna river. When we talk about the location of this particular place, it is situated in the Palanad Taluk of Guntur district of Andhra Pradesh, and it is about 160 kilometers to the southeast of Hyderabad and about 145 kilometers from the Guntur, that is the district headquarters. And when we look into the inscriptions of the Ikshvaku ruler, this particular name is mentioned as Bijaypuri. And in the, I told you, this name was on the basis of the name of Vijay Satkarni of Satvahan king or the Satvahan dynasty. But in the Ikshvaku inscription, it is just mentioned as this Vijaypuri as the Sri Parvath. So be very careful. You have to be very careful about all these names because these are the objective questions which are likely to come into the examinations. So this Vijaypuri is also known in the Ikshvaku inscriptions as Sri Parvath, and it seems that this Sri Parvath is the ancient name of Nalla Malai. Sorry, sir, your slide is not moving, sir. I'm not moving the slide right now. Yes, sir. Okay. All right. When I will be just moving the slide, I will show you and I will explain it. So the ancient name of this Nalla Malai is Sri Parvath, and these Satvahan or the Ikshvaku rulers,
they made this place as their capital. And we know that these people had come from the areas of the South Coastal in the Chhattisgarh region. And prior to that one, in the 2nd century AD, these rulers, the Ikshvakus, they were the Samants of the Satavahanas. And after they freed themselves from the yoke of the slavery of the Satavahanas, the Ikshvaku, they established their own free capital at Vijaypuri at the time of Vasishtiputra Sri Shantimul. So he was one of the important ruler of this particular dynasty. So moving to the slide, you can see this is the Nallamalai range, which you can see in the slides. And this is the Krishna River, which is visible. And whatever the structural remains you can see, these all are the part of this particular project. And this Nagajini Kunda was later on, when a dam was proposed by the government to be constructed. So all the important structures or the remains, they were salvaged, they were rescued, and they were taken up to the top of this Nallamalai range. And there, whenever you will go right now at that place, you can find the remains there. And all the important structures, all the viharas, all the stupas, and the other structures, they were just rescued from this valley, and they were salvaged, and they were put at the top of this Nallamalai hill. This Nagajini Kunda is a little bit, I would like to tell you about the antiquity. This Nagajini Kunda is a Paleolithic site also. And from here, we can get so many tools of like the axe, edges, chisels, and the hammers. Besides this, we also get some of the microliths. And these microliths, we know that they are the diagnostic tools of the Mesolithic periods. Not only this, in the historical period also, this particular place has its importance because so many megalithic monuments have been found from this particular place. So coming to our topic of the architecture of the stupa of this particular place, when this particular place was first of all explored or identified in 1926 by one Telugu assistant, his name was A.R. Saraswati of archaeological. He was the archaeological superintendent of epigraphy of ASI. And in March 1926, he discovered this particular site. And his discovery fascinated the A.H. Longhurst, who was associated with Archaeological Survey of India at that time. And he conducted excavations at this place from 1927, and his excavation continued till 1931. And as a result of the excavation, a large number of monasteries, ruins of the stupa, more than 9 or 10 in number, and other monuments were discovered along with some beautiful limestone sculptures. So I told you, when the plan to transform this valley into a reservoir or the dam was decided by the government, Archaeological Survey of India made an effort to salvage all the ruins before its submergence into water. And for this, a special project was just initiated. And because of this, it took 6 years to salvage more than 100 sites or the 100 structures which were present in the valley. And because of this, we come across many structures. So
मैं इसको हिंदी में बताना चाहूंगा कि जब पहली बार इसको खोजा 19 मार्च 1926 में, तेलुगु असिस्टेंट थे AR सरस्वती ने, उसके बाद AH लॉन्गर्स ने यहाँ खुदाई करवाई थी, और उस खुदाई में ही यहाँ पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स प्रकाश में आए थे, चाहे वो स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, चाहे वो मंदिर हो। परंतु गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट की वजह से ये सभी डूबने वाले थे पानी में, तो फिर इनको बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पहल की गई, और उसके तहत 6 वर्ष का ये कार्य लगा, और उसके उपरांत लगभग 100 से भी अधिक जो वहाँ पे संरचनाएं थीं उसको बचाने का अथक प्रयास किया गया। और जब हम बात करते हैं इन बौद्ध स्मारकों की, उसमें अनेक स्तूप हैं, चैत्य हैं, विहार हैं और मंदिर हैं। और इसके अलावा जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। कार्तिकेय का मंदिर है, शिव का मंदिर है, इसके अलावा हरिति की भी मंदिर है, वहां से जो खुदाई में मिली थी। और इन सभी महत्वपूर्ण स्मारकों को उनके मूल स्थान से हटाकर समीप के स्थित ही, जो मैंने आपको बताया कि नागार्जुनी की पहाड़ी या नल्लामलाई की जो रेंज है, उसके ऊपर उसको पुनः स्थापित किया गया। हम बात करेंगे स्तूपा के बारे में। तो नागार्जुनी कोंडा के एक्सकवेशन से जो स्तूप प्रकाश में आए हैं वे अमरावती के स्तूप से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, ये जो स्तूप है। और यहाँ जो सबसे जो बड़ा स्तूप है, जिसको कि महास्तूप की संज्ञा दी गई है, स्तूप नंबर 1 जिसको कहा गया है, आप प्लान देख सकते हैं कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर थे। तो महास्तूप नंबर 1 जो है, आप इसके प्लान को देख सकते हैं कि इसका निर्माण का जो आधार था वह एक सकट चक्र के रूप में किया गया था यहाँ के स्तूप का। और ये याद रखेंगे आपको, which one of the stupa from the Deccan region has the plan in the form of this cart wheel? So its answer is Nagarjuni Kunda. ये क्वेश्चन हमेशा आता है यूजीसी में। तो इस स्तूप के केंद्र की धुरी के रूप में एक गोल स्तंभ था, जो आप ब्लैक वाला ये देख रहे हैं स्पॉट, ये एक स्तंभ को डिनोट कर रहा है, और जिसके आरे 8, ये देखिए, ये जो आपको ये लाइन दिखाई पड़ रहे हैं, बेसिकली ये दीवार हैं, ये दीवार हैं, ये 8 एवं 16 ये आरे बनाए गए थे। और इसकी 3 परिधियां थी। यू कैन सी हियर, you can find the 3 circumference of this particular stupa। और ये 3 घेरों के समान ये 40 स्तंभों में ये विभाजित थी। पूरा 40 जो ये खाना है, ये टोटल जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 40 ये आपको जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस, ये जो आड़े और तिरछी जो रेखाएं दिख रही हैं आपको, बेसिकली ये दीवार हैं। और बाद में इसमें जो है 40 खानों को मिट्टी से भरकर इसको एक जो स्तूप को के आकार को प्रदान करने की कोशिश की गई थी उस समय के कलाकार या उस समय के वास्तुकारों के द्वारा। अमरावती की भांति ही आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्तूप की मेधी में, इसको जो उसको हम मेधी कह रहे हैं, इसमें आगे निकले हुए एक आयक चबूतरा है। ये आयक चबूतरा है जो आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में, 1 2 3 और 4, और इसके ऊपर ये पुनः 5 आयक स्तंभ बने हुए हैं या आयक खंभ बने हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्राउंड प्लान पे, तो इसमें जो पत्थर की वेदिकाएं थी, ये जो वेदिका थी वो लाइमस्टोन की थी, और इसमें 4 प्रवेश द्वार बने हुए थे। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। और स्तूप के अधिकांश भाग तथा वेदिका को संगमरमर के समान दिखाई पड़ने वाली जो चूना पत्थर है, उसके अलंकृत फलकों से इसको आच्छादित किया गया था, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये अभी वर्तमान में जो उसका स्वरूप मौजूद है नागार्जुनी कोंडा के स्तूप का, आप देख सकते हैं ये आयक मंच है, और इसके ऊपर आप देखिए कि आयक खंभ 4 ही हैं यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी एक नहीं है, टूट गया है।
ये चारों दिशाओं में आप देख सकते हैं, 1 2 3, और इस साइड में भी, ये इधर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पेड़ के पास, वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो अंड के जो ऊपरी का जो भाग है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसको सफेद रंग से संभवतः पुताई की गई थी। और इस महास्तूप के जो मैंने आपको कहा कि खुदाई से बहुत सारे जो है सो अभिलेख प्राप्त होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और उस अभिलेखों के आधार पर यहाँ की जो स्तूप की जो संरचना जो बनाई गई है, उसकी पूरी हिस्ट्री हमको जो है सो दिखाई पड़ती है कि किन किन लोगों ने बनाया है और किन किन लोगों ने अपने शासन काल में इसको संवर्धित या इसका पुनरुद्धार किया है, इस स्तूप का। और ये जो कालक्रम है वह लगभग 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया था। तो आप क्रोनोलॉजी में इसको नागार्जुनी कोंडा के स्तूप को बाद में रख सकते हैं 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में। और उससे पहले मैंने आपको कल बताया था अपनी क्लास में कि आंध्र में लगभग 400 वर्षों तक, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक पूरी तरह से यहाँ पे सातवाहनों का अधिकार था। और उसके बाद ही इक्ष्वाकु वंश के शासक, जिसकी की एक लिस्ट कल मैंने आपको दी थी, और उन लोगों ने यहाँ पे नागार्जुनी कोंडा जैसे जो महास्तूप का उसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ के जो अवशेष हैं मुख्यतः 3री शताब्दी के मध्य से लेकर के 4थी शताब्दी के मध्य तक की हैं। और जो मुख्य शासक हैं इक्ष्वाकु वंश के, वासिष्ठी पुत्र चांतमूल या शांतमूल, वीर पुरुष दत्त, एहुबुल शांतमूल या चांतमूल, चांतमूल या शांतमूल, दोनों ही नाम है, आपको मिलेगा टेक्स्ट में। उसके बाद रुद्र पुरुष दत्त, इन सबों के अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं और जिनसे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि इक्ष्वाकु वंश के शासक वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। परंतु इसके विपरीत जो राजघराने की महिलाएं थी या उनकी रानियां थी, दे हैड द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द बुद्धिस्ट फेथ। मतलब ये रानियों की अनुरक्त जो उनकी अनुरक्ति थी वह बौद्ध धर्म में थी। और इन्हीं की प्रेरणा की वजह से यहाँ स्तूपों का, इन रानियों की प्रेरणा की वजह से यहाँ के स्तूपों का निर्माण किया गया है। ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है, आप याद रखेंगे। पूरे जो स्तूपा के इतिहास में ये जानकारी हमको प्राप्त होती है कि जो स्तूपों का निर्माण महिलाओं के द्वारा जो करवाया गया है वह इक्ष्वाकु वंश की महिलाओं के द्वारा नागार्जुनी कोंडा के स्तूप का किया गया है। अगर हम बात करते हैं इक्ष्वाकु जो नरेश या शासक वीर पुरुष दत्त हैं, उनके शासन काल में जो स्तूप नंबर 1 है, स्तूपा नंबर 1, उसका निर्माण जो है वो किया गया है। और उन्हीं के समय में यहाँ के स्तूप का संवर्धन भी हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ से जो भी हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं, उन अभिलेखों से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रानियों ने जो यहाँ के स्तूप बनवाए हैं या अन्य जो संरचनाएं उन्होंने निर्माण करवाया है, उसके लिए उन्होंने कई अधिकारियों को नियुक्त किया था। आप याद रखेंगे, ये जो अधिकारी थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था नवकर्मिक। So these navkarmiks were the officers who were appointed for the construction of the stupa at Nagajini Kunda. और मैंने आपको बताया कि लॉन्घर्स साहब ने जो खुदाई यहाँ पे करवाई थी 1927 से 1931 में, वहां पे इनको 9 स्तूपों के जो भग्नावशेष या ध्वंसावशेष या रुइंस वो प्राप्त हुए थे। इसमें से जो स्तूप नंबर 1 जो अभी मैंने बात की महास्तूप, उसका जो विन्यास था वह स्पोक्ड व्हील की तरह था प्लान में। अदरवाइज जो दूसरे स्तूप थे उनमें से कुछ वो सॉलिड थे, उनमें कोई स्पोक्ड व्हील का हमको कोई एविडेंस या साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। लॉन्घर्स्ट के उत्खनन के फलस्वरूप जो यहाँ पे विहार या वृतायत, जो आपको ये है महाविहार जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा
ये और भी दूसरे स्तूप का रिमेन्स है, आप देख सकते हैं। और ये जो सर्कुलर जो वृत्तायत प्रकार के चैत्य ग्रह हैं, बेसिकली दीज आर द चैत्य गृह। चैत्य गृह बौद्ध धर्म में आप सभी जानते हैं कि ये एक पूजा का स्थल होता था। तो लौंघर साहब के उत्खनन में उनको अनेक विहार, सर्कुलर जो चैत्यास, स्तूपों के खंडहर, सिक्के, रेलिक कास्केट्स, पॉटरीज, स्कल्पचर्स और मोर देन 400 वेल डेकोरेटेड प्लैक्स मिले हैं। और ये जो प्लैक हैं वो दिखाई पड़ते हैं कि वो अमरावती के सदृश ही हैं। और यहाँ के जो आयत खम्भ हैं, जो मैंने आपको बताया कि चारों दिशाओं में वो 5-5 दिखाई पड़ते हैं, उनसे हमें 17 लेख प्राप्त होते हैं। 17 इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। और इसमें से जो इक्ष्वाकु शासक शांतिमूल है, उसकी बहन का नाम था शांति श्री। शांति श्री का नाम इन 17 में से 9 अभिलेखों में आता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे ज्यादा अपना समय और अपना धन शांतिमूल के जो पुत्र थे वीर पुरुष दत्त, उनके शासन काल में बहुत सारा धन व्यय करके ही महास्तूप का निर्माण किया गया था, जिसकी जानकारी हमें अभिलेख के माध्यम से होती है। और शांतिश्री जो उसकी बहन थी शांतिमूल की, उसने वीर पुरुष दत्त के शासन के 18वें वर्ष में एक चैत्यगृह और विहार का निर्माण करवाया था। और राजघराने की ही एक और जो महिला थी जिसका की नाम था बोधिश्री, उन्होंने भी एक अन्य जो है सो निर्माण चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। और बोधिश्री जो एक अन्य महिला जो मैंने आपको बताया, उनके लेख में लिखा गया है कि उसने ताम्रपर्णी जो है वो एंशिएंट नाम है आपका सिंघल द्वीप का। तो ताम्रपर्णी के भिक्षु संघ को उन्होंने एक चैत्यगृह बनवा करके दान दिया गया था। और इसके अलावा चैत्यगृह के अलावा उन्होंने 2 विहार भी उनके रहने के लिए बनवाए थे। ये नाम आप याद रखेंगे। इस विहार का नाम है कुलह विहार और सिहल विहार। इसका निर्माण बोधिश्री ने श्रीलंका से आए हुए जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके लिए करवाया था नागार्जुनी कुंडा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो राजघराने की महिलाएं थीं, उन्होंने अपने शासनकाल में जो इनका निर्माण करवाया, उसके लिए डिफरेंट ऑफिसर्स की इन्होंने नियुक्ति की थी। और जितने भी यहाँ के आर्किटेक्चर से संबंधित जो शब्द हैं या पारिभाषिक शब्द हैं, वो हमको यहाँ के अभिलेख से ही प्राप्त हो जाते हैं कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर था अमरावती के नागार्जुनी कोंडा के स्तूप का, वह कैसा था। इसमें बहुत सारे शब्द दिखाई मतलब जैसे पढ़ते हैं अभिलेख में, जैसे कि महाचेतीय, महायूप, महाविहार, विहार, चेतीय घर, चतुसाल, पधानशाला। पधानशाला मतलब ध्यान करने के लिए एक जो जगह होता था मुख्य मंडप, इसको पधानशाला कहा गया है अभिलेख में, जो कि नागार्जुनी कोंडा के खुदाई से प्राप्त हुए हैं। खनिय, खनिय मतलब जो पानी की जो द्रोणी है या पानी का जो जगह है, उसके लिए खनिय शब्द आता है। और आप सभी जानते हैं कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पानी का स्रोत होना कोई भी जो आर्किटेक्चर होता है उसमें बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा या आपने पढ़ा भी होगा या कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग सौभाग्यशाली हैं, कि जितने भी आपको ये बौद्ध धर्म के गुफाएं या जो विहार हो, चाहे वो आपको गुफाएं ये क्या कहते हैं चैत्य गृह हो, वो आपको किसी न किसी पानी के स्रोत के पास मिलते हैं। इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्द इन अभिलेख में आया है यहाँ के आर्किटेक्चर को समझने के लिए, वह है अलिंदा। अलिंदा मतलब है प्रवेश द्वार या प्रवेश मंडप। तड़ाक, तड़ाक मतलब पुष्करणी। 19 आप सभी जानते हैं, उसनीश द्वार, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो आर्किटेक्चर हो रहा था, बन रहा था, उसके देख रेख के लिए वहां पे नवकर्मिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी महिलाओं के द्वारा।
और ये जो स्तूप बनाया गया था, मैंने आपको कहा ये जो आरे खाने बनाए गए थे, 40 जो बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर था, उसको मिट्टी से भर करके उसके बाद उसमें ईंट की चिनाई की गई थी और पूरा स्तूप जो है सो आपको ईंट से बनाया गया था। और उसके ऊपर मैंने आपको कहा कि जो चूना पत्थर की जो है सो उससे आच्छादित किया गया था और ऐसा प्रतीत होता था उसको पुताई करने के बाद कि संगमरमर के सदृश उसकी संरचना दिखाई पड़ती थी। जो नवकर्मिक जो अधिकारी था, उसके ऊपर भी एक सुपरिटेंडेंट था, उसकी भी देखरेख के लिए, जिसको कि सेल वडक्की कहा जाता है, और ये अभिलेख में मिला जा गया है। और ईंट का जो भी चिनाई करने वाले कारीगर थे या वास्तु विशेषज्ञ थे, उसके लिए जो शब्द अभिलेख में आया है नागार्जुनी कोंडा के स्तूप में, उसका नाम है आवेशनी। ठीक है। और इन सब को देखने के उपरांत हम ऐसा कह सकते हैं कि विजयपुरी जो था वह 3री शताब्दी के मध्य में वह इक्ष्वाकुओं के द्वारा बहुत ही बड़ा वह केंद्र था, राजधानी था। और जो और भी महिलाएं थी जिन्होंने अपना योगदान दिया है यहाँ के स्तूप को बनाने में, आप देख सकते हैं कैसे ईंटों की चुनाई की गई है। और इन ईंटों की चुनाई जो करने वाले लोग थे उसको आवेशनी या आवेशनिन, ये दोनों ही शब्द आपको अभिलेख से प्राप्त हो जाते हैं, उनका जिक्र हमको दिखाई पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था कि शांति श्री के अलावा जिसके शासनकाल में या जो मतलब जो है सो वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में जो महास्तूप का निर्माण किया गया था, और इसके अलावा जिन्होंने चैत्यगृह एवं महाविहार का निर्माण करवाया था उसके शासन के 18वें वर्ष में, उसके अलावा वीर पुरुष दत्त की जो पत्नी थी जिसका कि नाम था भट्टी देवा, उन्होंने भी एहुबुल चांतबुल के समय में यहाँ पे एक स्तूप, 2 चैत्यगृह और जो है सो और विहार का निर्माण करवाया था। कोतबली श्री ये वीर पुरुष दत्त की पुत्री का नाम था और उन्होंने भी एहुबुल शांतमूल के समय के शासन के 11वें वर्ष में यहाँ पर एक स्तूप और महाविहार का निर्माण करवाया था। बोधिश्री राजघराने की एक अन्य महिला थी, उन्होंने भी चैत्यगृह और कुलह और सिंगली विहार, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वीर पुरुष दत्त के शासन के 14वें वर्ष में इसका निर्माण वहां पे करवाया था। और रुद्र पुरुष दत्त की जो माता थी जिसका कि नाम बम भट्टा था, उन्होंने यहाँ पे सर्कुलर जो चैत्यगृह है या विहार है उसका निर्माण करवाया था। मैं थोड़े से परिमाप आपको बताऊंगा। जो महाचैत्य है या जो ये देखिए वहां पे एक म्यूजियम है, अभी वहां आप जब जाएंगे, जो जितने मैंने आपको बताया कि 400 से ज्यादा अधिक लौंगहर साहब को खुदाई में वहां से जो फलक प्राप्त हुए थे वो इस म्यूजियम के अंदर, संग्रहालय के अंदर वो रखे गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उनमें से कुछ फलक देखिए, वो चूने पत्थर पे कैसे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का चित्रण आपको दिखाई पड़ता है। देखिए जैसे कि आपने अमरावती में देखा था, ये देखिए महाभिनिष्क्रमण का जो दृश्य है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं ये कह रहा था कि थोड़े से परिमाप मैं बताऊंगा कि महाचैत्य का जो व्यास था, डायमीटर ऑफ दिस महाचैत्य वाज 124 फीट। ठीक है। और इसमें हर्मिका और यष्टि और छत्र लगे हुए थे, जैसे कि आपको बाकी स्तूप में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो या साउथ इंडिया का हो। और अंड भाग की जो ऊंचाई थी वह लगभग 60 से 90 फुट की थी। अधिष्ठान पहले बताया जाता था। और आयक मंच की ऊंचाई जो थी वह भी मतलब लगभग 11 फुट की थी। और आयक मंच एवं उनको खंभ को संवारने का और सजाने का भी भरसक प्रयास किया गया था नागार्जुनी कोंडा के स्तूप में। और जो प्रदक्षिणा पथ था, जो अंड और वेदिका के बीच की जो जो प्रदक्षिणा के लिए जो जगह होती है, उसको लगभग वह 13 फुट चौड़ी थी। ठीक है। और आयक मंच पर जो बने हुए थे खंभे, वो लगभग आपको 22 फुट लंबे लगाए गए थे। और जो हर्मिका थी या शिलायष्टि थी, उस पे 3 छत्र आपको बखूबी दिखाई पड़ते हैं। और कई विद्वानों ने उन छत्र के बारे में अलग अलग
जैसा अपने मत बताए हैं कि इसमें से ये छत्र जो है वो मानुषी छत्र है, एक दिव्य छत्र है और एक विमुक्ति छत्र है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो था मैंने आपको नागार्जुन कोंडा के जो स्तूप के आर्किटेक्चर के बारे में बताया, जिसकी आपको आज के डेट में कोई भी अवशेष दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी है आपको अवशेष, वो जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, पुनः आप एक बार देख लें, वो केवल और केवल यही आपको स्वरूप, आपको अभी इतना ही वर्तमान स्थिति आपको इस महास्तूप की दिखाई पड़ती है नागार्जुन कोंडा में। और नागार्जुन कोंडा की अगर हम आर्ट की बात करते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि अमरावती आर्ट का जो प्रभाव है वह सुदूर पूर्वी देशों में कैसे पड़ा है, चाहे वो महात्मा बुद्ध के बनाने की कला हो या एक जो डेवलपमेंट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का या नागार्जुन स्कूल ऑफ आर्ट का, वह अन्य मतलब जो है सो पूर्वी देशों में, सुदूर पूर्वी देशों में कैसे हुआ है, वो आपको कल मैंने उसके बारे में बताया था। So now we will be talking about another important stupa of Karnataka region, which is known as Adholok Mahachaitya or the Sanati Stupa. You can see at the back of my figure, this is the present condition of the remains of the stupa which were found in the excavation. So this place is known as Kanganhalli also, and it is situated in the taluk of Chittapur district, Gulbarga in Karnataka. And this is that sculpture of Ashok. And on this basis, for the first time, you will get this image in the book of Upender Singh. I hope you might have seen this image. So this is that, and you can see here, this is the name written here, Ashok. And King Ashok with his queen, you can see very clearly in this particular lake. So this is a map showing the important Buddhist site in the lower Krishna Valley. And what is the importance of this particular place of Sannati? Because it was situated on one of the important ancient trade routes. You can see here, this is the region of Banvasi, where the Kadambas ruler they ruled. This is the place of Brahmagiri or Ishila. So be very careful. The ancient name of Brahmagiri is Ishila or Ishi, this one. And this is the location of Sannati. You can see in the map. And it is situated on the bank of the river Bhima. You can see. And this is the satellite image of this Kanganhalli or Sannati. And the scholars, they have identified this place as the ancient town of Santimati. And this place, Kanganhalli, literally means the village of Kanak. And we know that the history of Kanak Muni, he was one of the Manusi Buddha. And in the Nigali Sagar inscription of Emperor Asok, he mentions that the Devanam Priyadasi Ashok, he enlarged the stupa of the Kanak Muni twice in its original size in his 14th regnal year, when he had visited after 20 years this place after his coronation. And he erected a pillar there in the honor of Kanak Muni, which is considered as the former Buddha. And we know that there were 5 Buddha prior to this Gautam Buddha, and these all are known as Manusi Buddha. And among them, this Kanak Muni was one of them. And there is an inscription also at Bharut, which mentions Kanak Muni as the Bhagavato Konik Mena. And there are
many epigraphical references about Kanak Muni within the Sannati area. And one of these have been found at Sannati. And it begins with the invocation to the Lord Kanak Muni as Jayati Bhagwanam Kanakas. This is the salutation given to him. And the another epigraphical records is found within the stupa itself, which we will see. And it is engraved on a in a destroyed or in a just mutilated, seated image of Lord Buddha, which have been found from this particular area of stupa. So this is the satellite map showing the location of this particular stupa site. You can see here, this is the location of the stupa. And this particular stupa of this place, Sannati, is located in the valley, which has a contour of around 380 to 400 meter. And the main river is the Bhima. And besides that, there are other rivulets like Sirwal, Biral, Polur, Kagana in this region, which feed this river valley of Bhima. So this is the little bit history about this particular place of Kanganhalli or Sannati. Both are the same name. So you don't be confused about all these things. You can see here, there is a temple here. The name of this temple is Chandralamba temple, which is of medieval period. And here, this is basically a temple dedicated to goddess Durga. And at the base of the pedestal of this image or the sculpture, Asokan rock edict was used, which I will be showing you. You can see. This is that temple of the goddess Chandala or the Chandralama Parameshwari. And she is considered to be a Sakta Devi or the goddess Durga. So I was talking about this one. You can see here, this is that pedestal where you can find the inscription of Ashoka written in Brahmi character. And unfortunately, the people during the medieval period, they just destroyed, and they had set this particular pedestal into this one, and they were using it as a base. You can see it here. And where this particular place was thrown away by the people, still today the archaeologists or the scholars, they are trying to find out that particular specimen. So you can see here, this is that Asokan edict found at Sannati, which mentions the name of King Ashok. And these edicts were found to use at the pedestal for the goddess Kali or Durga at this particular Chandralama temple of Sannati. And this inscribed pedestal since been shifted to the stupa site. Now it is at the front gate of this stupa site, Kanganhalli. So when we talk about some of the work associated with this particular stupa, that in 1993-94, Archaeological Survey of India, the people of Archaeological Survey of India explored 24 villages on the bank of the river Bhima. And among these, this was the place of Sannati was also explored. Beside this, the other places like the Husur Gundagi, it was also explored, and some trial excavations were also done at these places. So I'm not going to tell you about all these other places. We will coming to our main topic of Kanganhalli or Sannati. So during the exploration in 1993, here a crater-like circular depression was found, and also a mound of around 2.5 meter high was found by the scholars or the archaeologists. You can see this was the before the
This is the general view of this Mahastupa Mount or the Adalok Mahachaitya. And now it is being used as, nearby area is being used as the agricultural land of the, and here the black, this is very much famous for the black cotton soil. So cotton is being just cultivated here. And after the thorough exploration in this particular area of Sannati, other places, trial excavations were conducted by the authorities of Archaeological Survey of India. And some major excavations were carried from 1996 to 1997, and again from 2001 to 2002. So you can see here, this is the view of the Stupa Mount before the excavation. And this is that place at present condition of this stupa. You can see here. You can see here, this is the plan of this particular stupa at Sannati. Here the Pradakshina path is choked with the disturbed members of the Ayak platform. You can see here. These all are the members of the Ayak platform. And the railing parts, slabs of the Medhi, whether it is lower Medhi or upper Medhi. So here you find two Medhis or the two circumvallation. You can see here. Here at this ground level as well as at the upper level. And the total diameter of this particular stupa was around 22 meter. And the drum of the stupa is divided into the two tiers. I told you that is the lower as well as the upper Medhi. And the foundation of this stupa was laid in the limestone slab, which was around 45 to 50 meter thick. And each panel, it was just decorated with the panels. And these panels, you can see here, the diameter of this panel, 1.2 meter into 1.1 meter with a height of around 150.15 meter. And here the lower Medhi had the huge sculptural panels depicting the Dharmachak monastic life, the stupa models, Singhashan, Bodhi Bricks, and the Muchlind Nag as the encasing member in this stupa. And the panel here, they were bordered with the slender pilasters, which had the sculptures of the stupa, tree in railing, and the sculptures of the beautiful female chauri bearers. You can see here, the upper Medhi extends only up to the few places only. And this upper Medhi slab, they were interlocked like the lower Medhi, which measured around 2.80 meter in height with 2.2 meter width. And they were carved with beautiful Jataka stories. I will be telling you which were the Jataka stories which were just depicted in this particular stupa. And here again, like the Nagajini Kunda stupa, the core of this particular stupa was filled with the river, the pebbles from the river Bhima, the gravels as well as the boulders. They were just kept into this particular core. Then encasing was done, and then the und portion was raised. And the portion of this und was jutted from the upper drum, was inclined to form a hemispherical dome. So whatever the remains of this particular stupa we are able to see today is because of the excavation conducted here. And here you can see here the railings or the Vedika portion, typical to the stupa architecture that we know this is an integral part, was composed of the series of the Suchi and the Stambh, that like the Sachi one. And the railing of the stupa was placed 3.6 meter away from the Medhi. And the interspace between the drum, that is the hemispherical shape, as well as the railing was paved with the dressed limestone slab. So this is the only stupa where you can find
the floor-like structure into the Pradakshina path. And here the uprights are treated with the lotus medallions in the exterior, just like the Amravati, which we had seen yesterday, as well as in the interior also. And you can see here the suchis, they were provided there also with the interspacing of around 8 centimeter. And the total length of the suchi was 45 centimeter. And the uprights or the thumb or this thumb, they were held in position by the usnis or the coping stone, just like the architecture of the other stupa. Ayak platform was also there, like the which we have seen at Amravati and Nagajini Kunda, in all the 4 cardinal direction, which measured around 3.2 meter into 2.6 meter into 1.5 meter at the cardinal directions. And the most important feature of this Ayak platform was that instead of the Ayak pillars, there were the huge colossal image of the Buddha in different position or in different postures in all the cardinal directions. You can see here, this one. You can see, just like this is the Stupa of Amravati, which you have seen. So, just like this one, you can see here, it was also very beautifully decorated Stupa of Karnataka region. You can see here. There are many structural units or the structures they are associated with this particular stupa or the Mahastupa. You can see it here. And I told you that more than 170 inscriptions were inscribed on different architectural units of this stupa. So this is the only stupa where each and every architectural fragment had the inscription, and on that basis only we were able to know about the different jatakas, different decorations over this stupa. You can see here all these inscriptions are in Brahmi character script, and they can be assigned to 1st century BC to 3rd century AD. And these inscriptions are of various category. They are donative in nature. They had the labels which refer to the contribution by different people. They refer various Jataka stories, these inscriptions. And beside this, they also give us some of the names of the kings and the royal persons associated with this particular stupa. So on the basis of these inscriptions, it reveals that the Mahastupa was patronized by the Satvahana kings, traders, Buddhist monks, and the common people. And here you can see here. And in one of the inscription only, it has been mentioned as the Adhalok Mahachaitya, and that is why it is known as Adhalik or Adhalok Mahachaitya of Sannati. So apart from the Jataka stories, there are also the panels which contain the portrait sculptures of the important kings of the Satvahan dynasty, like Sri Satkarni, Ulumabi, Simuk, and the most important, which I showed you, that is the portrait of the King Ashok of the Mauryan dynasty with a level inscription below it, which I showed you. These are some of the name of the kings which are mentioned in the inscriptions of Sannati, Raja Govind, Raja Tayyan, Raja Padmavesa. You can see it here, Sri Yagasatkarani, and many others. You can see again, this is that view of Raja Ashok or King Ashok.
So later on, in 2006-7, again here excavation was conducted. That was in 1994-95. And after this, in 2006-2007 again. And after this one, you can see here, this is the plan of the Stupa complex of this Kanganhalli or Sannati, where so many structures, more than 10 in numbers, have been found in the excavation itself. This is the finding of the apsidal brick Chaitya there at Sannati, Mahastupa, as well as other structures. You can see here the Stupa complex, which was exposed during the excavation at Kanganhalli. You can see it very beautifully. Ayak platform. This is that Ayak platform. You can see it very carefully right now here. This Ayak platform, which I told you about the dimension, and all the platforms here are in bad condition in the excavation. And I was telling about this image. You can see here. This is the collapsed Eastern Ayaka or the Ayak Manch, where you can find out this image of Buddha in the Bhuspars Mudra. You can see this is the Mahastupa general view of the Kanganhalli. Today, when you go there, you can see it here, like this one. These all are the Ayak pillars which have been found. You can see how it is just lying on the ground. You can see, and it had the beautiful decoration. And these are the decorated just over this Suchi and the Stamba. I told you how beautifully they were decorated, just like the Amravati as well as Nagajini Kunda. Beside this, many other sculptures have been found in the excavation from this place. You can see here, this is one of the sculpture of the Yaksha found from the southern as well as the northern entrance of this Stupa of Sannati. So again here you can find out so many main events associated with the life of Buddha. You can see here, this is the panel depicting the birth, the Maya's dream, the birth scene, many other. You can see here. And all these colossal Buddha images, which I told you, in the just in front of the Ayak platform, they were installed. They have been found in the excavation. Beside this, some of the sculptures are the portraits of important Satavahan kings, like the head of the Yagasri Shatkarani. They were found in the excavation. The lion capital was also found in the excavation. These all were the decorations on the, this you can see here, the huge chhatra at the topmost portion of the Harmika found in the excavation. And again here it was in the different structural phases, using the stone as the foundation stone. And then I told you with the rubble of, or the pebble or the boulder of this Bhima river, encasing of this core was filled, and then encasing was done. You can see here beautiful this slab showing the Dharma Chakra as well as the Muchlind Nag. You can see different, you can see very beautiful examples. You can see these are some of the line drawings of that Muchlind Nag. So we can say that this Kanganhalli or the Sannati artist, they were very much excellent in sculpting this multi-hooded Nag, that is the Muchlind Nag, which even tells us about the anatomical details of this particular creature. You can see other decorations and some of the inscriptions mentioning the different events you can see from the life of Buddha. Maya Devi's dream, you can see it here. Narration of this dream by Maya Devi to Sudodhan. So all the important events associated with the life of Lord Buddha has been just depicted here. You can see here transportation of this relic
that we have seen also on the Torans of Sachi, this particular scene. Again here, the stupa, construction of the stupa. Another panel showing the important events with the life of Buddha. And I told you that beside this, we also get some of the portraits of the Satvahan kings, like the Satkarni, you can see here. So from this stupa, whether it is at Nagajini Kunda or Amravati or at this place of Sannati, we can see that the propagation of Buddhism was well established in the areas of extreme south, and we know about the role of King Ashok in its propagation, because after the third Buddhist council, which was held at Patliputra in around 250 BC, he set out many missionaries to different parts of the globe for the propagation of the Dhamma or the Buddhism. And so many peoples where they were sent to different parts of different countries. And that can be easily understood by the establishment of Buddhism even in extreme south. So these are some of the other events associated with Lord Buddha. You can see here some of the beautiful portraits of the Satavahan rulers and some of the important jatakas which have been just depicted in this stupa at Sannati are the Vilamiya Jatak, Vishantar Jatak, Hans and Sup Jatak, Chadant Jatak. So many Jatakas are there. Vidur Pandit Jatak. You can see here, these all are the narrations which have been just depicted in this stupa. You can see here depictions of the Chadant Jatak. That is a story belonging to the areas of Varanasi or this particular region. So you can see here the beautiful example of the craftsmanship of the artist in the executions of the lotus medallions at the Suchi portion at Sannati, as well as on the Usnis portion. You can see here, these all are the examples of the beautiful lotus medallion on the crossbar, that is the Suchi at this particular place. And also beside this, you can see or you can notice the beautiful ornamentation of the nobleman as well as the woman, which were used to decorate this particular stupa. And it can be clearly seen in this art of this Sannati. And these are some of the inscriptions which have been found from this place of Sannati. I'm not going to tell you the details about all these inscriptions. So we can say that this Mahachaitya or the Adalok Mahachaitya at Kanganhalli reintroduces Asoka, the Mauryan emperor, into the south. And because of this particular stupa, whether it is at Amravati, Nagajini Kunda, or at Sannati, we are in a better position to know about the Satvahana rulers in a much better way. And it also gives a new chapter in the Buddhist art of this particular region of Karnataka, peninsular India. And not only that, it also rewrites the chapter of the early art of the Karnataka region. And because of these stupas, we are in a position to know about some aspects of the stupa architecture of the Karnataka region as a whole. So this would have been the conjectural view of the stupa at Kanganhalli or at Sannati, just like the stupa of Amravati or Nagajini Kunda, you can see. So this is all about
the stupa architecture of the Deccan region or the peninsular India.